आप में गुस्सा है, सैडनेस है, आज क्या आपकी अपनी जो इमोशन है, भावना है, क्या बताएंगे? कश्मीरियों को दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको गुस्सा है, जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ गुस्सा है, और दर्द है, फीलिंग है, जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके से एक बात बोली, मैं उसको दोबारा दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि दर्द है जिनके साथ ये हुआ, गुस्सा है जिन्होंने ये किया, और दुख है कि कश्मीर में ऐसा हुआ, और जिन्होंने ये किया वो अपने आप को किसी भी मजहब के रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे नहीं मान सकते। The colors of the Tiranga shining bright here at Lal Chowk in Srinagar, quite literally the nerve center of the city. We're here on the ground in the aftermath of the Pahalgam terror attack, and despite the carnage that has taken place and the shock and the trauma that it has sent through the entire valley, Kashmir is trying to get back on its feet. You can see on the other side, the shops are still open. And though there is only a trickle of tourists at this point, given the terror attack that has just taken place, the people here are doing their best to somehow get back to their routine, and they're also appealing to the rest of India, please don't stop coming here. This, of course, as India prepares its next steps for retaliation against Pakistan. Now, we'll be talking to some of the people here on the ground, but first, a little bit of history about Lal Chowk, the Ghanta Ghar, or the clock tower as it's known. This chowk, once inspired by the Red Square of Russia, has always been witness to the trials and tribulations, the ups and downs of the Kashmir Valley. It was here that Sheikh Abdullah famously recited a Persian couplet to talk about the integration of Kashmir, Jammu and Kashmir, into India, saying that I have become you, you have become me. I became you, you became me. So there is no separation. In fact, even in this moment of tragedy, in the shadow of violence, we stand actually at a similar moment where the people of the valley, angry and anguished, are saying to the rest of India, stand with us, we stand with you. This clock tower is once again here at the Lal Chowk, witnessing an inflection point in Jammu and Kashmir's history. It was built as a matter of trivia by Bajaj Electricals in the 1970s. But let's talk to some of the people here. As I said, very few tourists, thank you. Very few tourists, so we're going to try and talk to some of the tourists. Hi. How are you? I'm fine, thank you very much. So tell me, where are you from? I'm from Pune. And what's your name? My name is Mateen. Mateen, when did you come here? I came last night, not last night, day before yesterday I came. But after the Pahalgam terror attack? Yes, of course. So this is very interesting. Mateen has come here after the terror attack, and we are meeting some people who are coming here despite the terror attack. आप क्या करते हैं पुणे में? I work in a software company. Okay, what made you come here when at a time when tourists were fleeing the Kashmir Valley? I had booked my tickets way back in January, and I was very firm on my plan. And I have my cousin also with me, so we are two families. And I had a few friends also with me who were supposed to come, but unfortunately they cancelled. But I stick to my plan because I knew now it would be definitely more safer than earlier before. Yeah. And we were convinced that this would be, just probably a one-off incident that happened for whatever reasons. But I think so. This was the safest. Right now, I've been to Sonmarg today. It was completely safe. There were security all around, and we were really well taken care of. So you did not want to be cowed down by the terrorists? Absolutely not, and we were not afraid of it. And you've shown real solidarity with the people here at a time when they need it. Absolutely, and we are spending, we are supporting the economy and all of that. So we are doing all the things that the tourist does. So right now we are on shopping. So
Yeah, it's all good. So enjoy yourself and thank you. I'm sure the Kashmiri people will want to thank you for showing this solidarity. Thank you. Carry on the good work. Thank you. And I want to say to you that it's not just showing solidarity with the people of the Kashmir Valley. When people like you come here right after a terror attack, it's also standing up for India. It's also saying India will not bow down to terrorism. Absolutely, absolutely. Long live India. Long live India, and the colors, as I said, of the Tiranga are shining brightly there. Let's keep going. We're just spontaneously talking to people here, no agenda. Whoever we meet, we're just having a chat with them. What are they thinking? What are they feeling at this point? आप देख रहे हैं दुकानें अभी भी खुली हुई हैं और आपसे भी मैं बात 2 मिनट करती हूँ. दुकानें तो खुली हुई हैं, टूरिस्ट भी धीरे धीरे आ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों को ये पहलगाम के टेरर अटैक के बाद? मैम टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा अटैक जो हुआ है वो हुआ है टूरिस्ट पे और इसका असर हुआ है हमारी लोकल शॉप्स पे जी. जो लोकल शॉप्स पे 95% जो है 95% टूरिस्ट पे ही अटैक हुआ है और इससे काम पे बहुत बुरा असर पड़ा है. बहुत बुरा असर हुआ है बहुत बुरा असर हुआ है सर तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि अब आगे क्या होगा? क्या कह सकते हैं मैम टूरिस्ट पे ही सब कुछ डिपेंड है मैम क्या कह सकते हैं तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है कि देखिए दिस गोज राइट टू जब जगुलर वेन की बात होती है ना ये जगुलर वेन को दूसरी तरह से वो फ्रेज इस्तेमाल किया जाए द वेरी sort of nerve center, the livelihood, the well-being of the Kashmiri people has been hit. And therefore, the terrorists who did this and their backers should remember that while claiming to ostensibly speak for the issue of Jammu and Kashmir, they have in fact shown themselves to not care at all about the well-being of the people here. Just dastardly horrific violence and religious targeting in Pahalgam. People lined up and killed for their faith, for being Hindu. But even in the midst of that blood and gore have come the tales, and we've been trying to tell some of them, of local Kashmiris who tried to save lives. And one of them, as we know, even got sprayed with bullets, lost his life for attempting to do precisely that as he tried to wrestle one of the terrorists to try and take his rifle away. Anyway, let's keep talking to people here. Hanji, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अहमद भट्ट है और आप भी दुकान चलाते हैं यहाँ पे? क्या करते हैं? जी मेरा ड्राई फ्रूट का दुकान है वहाँ पे लतपोरा में जी. अच्छा जी तो अभी क्या मतलब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पे हमने देखे जैसे 30 साल में मैंने जो प्रोटेस्ट देखे हैं वो मैंने यहाँ नहीं देखी. बहुत से लोग बाहर निकले मोमबत्तियां पकड़ के काले झंडे पकड़ के. यहाँ की जगह को लाल चौक कहते हैं. कुछ दिनों तक तो ये काला भी हो गया काले झंडों की वजह से. तो ये जो कश्मीर में हम देख रहे हैं ये इससे क्या मैसेज आ रहा है? देखिए जो भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था. पूरी कश्मीर इन लोगों के साथ है. जो भी भाई वहाँ पे शहीद हुए चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखते थे या हमारा भाई वहाँ पे आदिल शहीद हुआ हम नहीं चाहते थे ऐसा हो. टूरिस्ट हमारी जान है. हम उनसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं. वो आते हैं यहाँ पे. आप किसी भी टूरिस्ट के साथ बात कीजिए जो यहाँ पे इस टाइम है जी. वो आपको कश्मीरियत के बारे में बताएंगे कि कश्मीरियत क्या है. ये आप कश्मीरियों से मत पूछिए. जो भी टूरिस्ट इस टाइम अवेलेबल है यहाँ पे आप उन्हीं से पूछिए. पर आपको लगता नहीं कि कश्मीरियत का ही कत्ल हुआ पहलगाम में? हाँ कश्मीरियत का कत्ल हुआ है लेकिन जिन लोगों ने किया है उनका कोई मजहब नहीं है उनका कोई दीन नहीं है. हम कश्मीरी जो भी कश्मीरी है चाहे वो कोई हमारी माएँ हैं बहनें हैं हमारे भाई हैं बुजुर्ग हैं हम इसके साथ नहीं है. हम इसको कंडम करते हैं. जो भी हुआ हम इसको कंडम करते हैं. हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिन्होंने ये किया है. ये बताइए यहाँ पे ज्यादा डर का माहौल है कि दुख का माहौल है कि गुस्से का माहौल है? देखिए आप में गुस्सा है सैडनेस है कि आज क्या आपकी अपनी जो इमोशन है भावना है क्या बताएंगे? कश्मीरियों को दुख है ऐसा नहीं होना चाहिए था. उनको गुस्सा है जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ गुस्सा है और दर्द है फीलिंग है जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ नहीं होना चाहिए. हमारी बहन आई थी उसने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है हमने सुना है मैंने खुद सुना है कि मैं पीस चाहती हूँ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कश्मीरियों को इसमें इन्वॉल्व मत करो.
آج یہ یہاں پہ بہت سی فیملیز ہیں جنہوں نے بات کی کہ کشمیر کے لوگوں نے کیسے ان کو مدد کرنے کی بھی کوشش کی. تو آپ نے ایک بہت طریقے سے ایک بات بولی, میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ درد ہے جن کے ساتھ یہ ہوا, غصہ ہے جنہوں نے یہ کیا, اور دکھ ہے کہ کشمیر میں ایسا ہوا, اور جنہوں نے یہ کیا وہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کے ریپرزینٹیٹیوز نمائندے نہیں مان سکتے. میں آپ کی شکریہ کرتی ہوں, آگے بھی چلتے رہتی ہوں, لوگوں سے بات کرتی ہی رہوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکانیں ہیں, شالز اور کشمیر کی جو فیمس شالز ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں, لیکن یہ جو بزنس ہے یہ ٹورزم پہ ڈیپینڈنٹ تھا, اینڈ لٹرلی دا لائیولیہڈ آف the people of the valley has been hit badly. لیکن یہاں کے لوگ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں یہاں پر دکھ پرکٹ کر رہے کیونکہ ہماری اکانومی ہرٹ ہوئی ہے. Yes, that's a big reason. But beyond that, whatever has happened has shameful. One protester we saw even broke down. وہ رو رہے تھے جب وہ سڑک پہ نکلے پروٹیسٹ کے لیے. دوسرے ایک پروٹیسٹر نے کہا کہ انڈیا کو ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے once and for all. پر سبھی نے یہ کہا کہ ہم باقی بھارت, ریسٹ آف انڈیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ, ہمارا ساتھ مت چھوڑیے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینیکوینز لگی ہوئی ہیں اور تھوڑی دکان بند ہونے کی پریپریشنز ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی سر سے 2 منٹ بات کریں گے. سر تھوڑا یہاں آ جائیے. سر آپ کا نام سر؟ میرا نام جاوید ہے. جاوید صاحب تھوڑا اگر آپ باہر آ جائیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو ہوا ہے اس پہ جتنے ورڈز ہو کمی ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا آگے چلتے یہ ہیں. غلط ہوا, جو ہوا یہ غلط ہوا, اور جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنا چاہیے. وہ کون ہے کیا ہے ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو آپ آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ابھی بھی 9, میں آپ کو ٹائم بتانا چاہتی ہوں, بلکہ گھنٹہ گھر میں آپ ٹائم دے سکتے ہیں. 9:15 کا ٹائم ہے, اور آپ سوچیں گے کہ ایسا ٹیرر اٹیک ہوا ہے تو بالکل سناٹا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ ابھی بھی نکلے ہوئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ رضوانہ شیخ. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ممبئی. اچھا, تو آپ کب آئی یہاں پہ؟ ہم لوگ 30th کو بھی لینڈڈ ہوئے ہیں. آفٹر دی اٹیک؟ After the attack, yes. واٹ میڈ یو کم؟ We believe that of course government will increase the security and there won't be any possible second recurrence of the incident. So that's why we were sure about that. A lot of people tried to stop us, but we were sure that this will not be repeated immediately, at least, I'm sure. And of course government must be taking. But what made you do it? We wanted to see the Kashmir and I didn't. آپ پہلے کبھی نہیں آئے؟ This is my second trip. So you didn't want to cancel? I didn't want to cancel. What message are you sending by the fact that you still come here? And is that your friend who's come with you? My relative, Your relative. Why? What made you come? ہم لوگ اس لیے آئے کہ کشمیر از اسٹل پارٹ آف انڈیا. Yes. کشمیر از انڈیا. کوئی ٹینشن ہی نہیں, ڈرنے کی ضرورت. کشمیر از انڈیا. ہاں بالکل بالکل. اور کشمیریز جنہوں نے اتنا ایفرٹس لگائے, جو اتنے مہمان نواز ہے, جو جان دے دیتے ٹورسٹ کے لیے, ان کے لیے تو آنا ہی چاہیے. And they were very sad that incident happened. Whatever incident happened, they did the protester also. You weren't scared coming here? No, I was not scared. As I said, I know once. security ہوگی. بالکل بھی نہیں, not once. پر گھر والوں نے روکنے کی کوشش کی. پھر آپ نے ان کو کیا بولا؟ ہم نے بولا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور آپ خوش ہیں یہاں؟ ہم خوش ہیں. ہم لوگ ابھی تک اس لیے تو شاپنگ کر رہے ہیں. At 9:15, we have Rizwana. And what's your name? Sana. Rizwana and Sana here from Mumbai. Have a good trip. From Pune, from Maharashtra. Have a good trip. And a lot of tourists, interestingly, here, despite what has happened, not enough to contain the big body blow to the economy of the Kashmir Valley, but still, even the trickle making its own symbolic gesture. When somebody comes here from Maharashtra and says, Kashmir is India, India is Kashmir, it is indeed, as I started off by saying, reminiscent of a speech made by Sheikh Abdullah right here at the Lal Chowk, when he said, I became you, you became me. There is no separation. Perhaps that is the message that today we all have to remember. Because if we are to counter Pakistan's attempts to divide us as Indians, this is our most powerful counter to them, to the Pakistani deep state, to the ISI. I say we as Indians will not be divided. Here on the ground in the Kashmir Valley with Anoop Barkhadat for Mojo Stories.